Bismillahirrahmanirrahim. My name is Huzaifa and today my presentation topic is immunity. So first of all we discuss what's immunity. The immunity is defined as the capacity of the body to resist pathogenic agent. इम्यूनिटी हमारे पास बॉडी की वो कैपेसिटी वो रेजिस्टेंस फॉर होती है जिसकी वजह से हम पैथोजेनिक एजेंट को स्टॉप कर सकते हैं। मतलब इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रिवेंट होती है फ्रॉम द पैथोजेनिक एजेंट्स। और इसके बाद जो दूसरा डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक एक्सेट्रा। So in the second definition we know that the ability of the body means the immunity is that ability of the body which resist any type of foreign body like bacteria, virus, toxic, which prevent the entry of these foreign bodies. So हमारे पास जो इसमें हमारे पास ये आते हैं ना कि मतलब ये एबिलिटी ऑफ द बॉडी है जो जिसकी वजह से हम ये पैथोजेनिक एजेंट वगैरह को रोकते हैं। इसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सो देयर हैज़ अ टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। नंबर फर्स्ट इज़ द इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इनेट इम्यूनिटी। सो व्हाट इज़ इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी इज़ द इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजन। इनेट इम्यूनिटी हमारे पास इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी है। इनबॉर्न कैपेसिटी मींस ये पैदा होते ही बच्चे में मौजूद होती है जिसकी वजह से हम पैथोजन को रेजिस्ट करते हैं। इफ़ बाई चांस एनी पैथोजन एंटर टू बॉडी देन द इनेट इम्यूनिटी एलिमिनेट्स देम बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज़। अगर हम बाई चांस कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो इसको एलिमिनेट करती है बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज़। मतलब इसी को डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज़ आफ्टर बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज़ द इनेट इम्यूनिटी और द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी किल दोज इन्वेडिंग एलिमेंट्स आर पैथोजेनिक और फॉरेन बॉडीज़। सो इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो हमारे पास इम्बॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी है, इम्बॉर्न इम्यूनिटी है, उसको हम अदरवाइज इन अदर वर्ड्स वी कॉल्ड द नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। Why we call this the non-specific immunity? Because this immunity is not against one type of the pathogen or one type of the foreign body. It's against all type of the bacteria, viruses and toxic substances. This type of immunity represent the first line of defense against any type of pathogen. और ये इस वजह से हमने जो पहले मैंने बात की कि ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है तो ये इसमें क्लियर हो गई कि ये अगेंस्ट वन टाइप ऑफ पैथोजन जो है ये हमारे पास नहीं होती, ये मुख्तलिफ पैथोजन के खिलाफ जो है काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो नंबर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द इनेट इम्यूनिटी और इम्बॉर्न कैपेसिटी इज दैट द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड द एसिड इन द स्टमक डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिज्म एंटरिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू फूड। So the first example of the inborn capacity are those enzymes or the digestive or acid which is present in the stomach. They kill or destroy the toxic substances or organism entering digestive tract through when we eat or we ingest the food. So also the street food or the many type of foods like shawarma, burger वगैरह ये हमारे पास जो है it's also a contaminated food. So when we eat or we ingest the contaminated food, though the enzymes present in our stomach or the acids present in our stomach kill these pathogenic substances or these pathogenic मतलब जो हमारे पास pathogenic organism वगैरह होती है। So the second example of the inborn capacity or non-specific immunity is that phagocyte cell. Neutrophils, monocytes and macrophages ingest and destroy the microorganism and foreign bodies by phagocytosis. There are many types of the cell which is present in our body which kill pathogens or invading microorganism by many type of the process. So in these cells, neutrophils, monocyte and macrophages are dead cell which ingest and destroy the microorganism and foreign bodies by the phagocytosis, and these is the also an important part of the innate immunity or non-specific immunity. The third one example of the innate immunity or non-specific immunity is urogenital system. So the acidity in urine and vaginal fluid destroy the bacteria. We know that the acidity in urine and also the vaginal fluid is also acidic. So this acidic nature of the vaginal fluid and the urine destroy the bacteria. The fourth one example is interferon. The interferon is a protein which is present in our body which inhibit the multiplication of viruses, parasites and cancer cells. So interferon is also the non-specific immunity which inhibit by many processes
by many processes, multiplication of viruses, parasites, and cancer cells. The second one immunity is the second one type of immunity is the acquired immunity. So what's acquired immunity? Acquired immunity is the resistance developed in the body against any specific foreign body like bacteria, viruses, toxin, vaccine, and transplanted tissue. So the acquired immunity is the resistance developed in our body. So we know that the first immunity is the type of immunity which is non-specific, and this immunity, the acquired immunity, is a specific against one type of the foreign body like bacteria, viruses, toxins, vaccines, and transplanted tissue. So in this way we call this type of immunity the specific immunity. It is the most powerful immune mechanism of the body. So this is the important point. The acquired immunity is the most powerful immune system or immune mechanism which is specific in our body. The lymphocytes are responsible for the acquired immunity. There are some types of the cells which are responsible for the development and which play an important role in a vital role in our body for and to made or to form the acquired immunity. The lymphocytes are those type of cell. So types of acquired immunity, two types of acquired immunity development in our body. Number one immunity is that the cellular immunity which is developed in our body against any specific pathogens, and the second one is the humoral immunity. So we discuss first of all the cellular immunity. Cellular immunity, the lymphocytes are responsible for these two types of immunity. Lymphocytes are responsible for these two types of immunity. The both humoral and cellular immunity is made up of the lymphocytes. The T lymphocytes are responsible for the board of the cellular immunity. The T lymphocytes are responsible for the सेलुलर इम्यूनिटी. सेलुलर इम्यूनिटी के लिए हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द सेलुलर इम्यूनिटी आर आल्सो नोन एज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. The cellular immunity we also known as the cell mediated immunity. The lymphocytes when enter to the thymus from circulation and proceed to T lymphocyte. We know that all the cells are enter to the into the site which is called the thymus for the proliferation or for the maturation. So when the lymphocytes enter to the thymus for the circulation and maturation, they convert to the T lymphocytes. They recognize and destroy infected cells directly or activate other immune cells to eliminate the pathogen. The process or the mechanism by which the T lymphocyte destroy the infected cells. There are two types. First, the first method is that they kill directly the pathogen or the foreign body. Or the second mechanism is that they activated their immune cell to eliminate the pathogens. The natural killer cell is also involved in the cellular immunity. जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल है वो हमारे पास आल्सो इन्वॉल्व है इन द सेलुलर इम्यूनिटी. द नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय द कैंसरियस सेल्स एंड इन्फेक्टेड सेल. द mechanism of the natural killer cell by which they destroy the invading organism like bacteria, toxin, transplanted tissue is that they destroy the cancerous cell and infected cell. They directly destroy it. They cannot activate the immune cells to eliminate the pathogens, but the natural killer say follow the first one mechanism, directly destroying. So the natural killer cell directly destroy the infected cell or the cancerous cell or the transplanted tissue. The macrophages engulf. There are many type of cells are present in our body which follow the second mechanism to kill these microorganisms, and the specific they have specific. This is called the macrophages. So macrophages engulf and digest the pathogen. By engulfing and digesting the phagocytosis, the process of the phagocytosis is formed by the ingestion and digestion. They are followed by the phagocyte cell. And the second one specific immunity is the humoral immunity. So we discuss at last the humoral immunity. The humoral immunity is a part of our immune system that involves the production of the antibodies. Humoral immunity is a part of our immune system which involve in the production of the antibodies. So antibodies are that type of the immune cells, are that type of the immune which is present in our body as a memory. When a virus enter to our body, there have some antibodies against them. So these antibodies activated and kill the microorganism and do not
इम्यून सिस्टम जो है हमारे पास वो फिर से एक्टिवेट नहीं होता, मतलब उसके खिलाफ जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ है वो प्रेजेंट होते हैं और वही उसको किल कर देती है। दीज एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन, द एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन डेट आर क्रिएटेड बाई स्पेशलाइज सेल कॉल्ड द बी सेल। So we know that the B cells B cells are those special cells which produce or which created a protein that are called antibodies, and they have the memory of against any specific pathogens. When our bodies encounter the foreign substances, this helps to neutralize or eliminate the invader from our body. Okay. These antibodies remember the specific substances they have encountered. सो दीज एंटीबॉडीज़ रिमेंबर द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, मतलब ये हमारे पास जो है मेमोरी होती है, इसमें ये उसको सब्सटेंसेस को रिमेंबर रखते हैं। दे हैव इनकाउंटर्ड बिफोर विच अलाउज आवर इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली। जो ये हमारे पास जो है वो क्विकली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं अगेंस्ट एनी पैथोजेंस। दिस इज़ वाई वी कैन डेवलप इम्यूनिटी टू सर्टन डिजीज़ आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड और वैक्सीनेटेड। और हमारे पास यही वजह होती है जिसकी वजह से हम वैक्सीन वगैरह लगाते हैं। हम सर्टेन डिज़ीज़ के लिए, मतलब हम पोलियो की वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, तो हमें पता होता है कि ये जो हमारे पास वैक्सीन होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है मैनी टाइप ऑफ द वायरसेस विच आर किल्ड बाय द हीटेड आर दोज वायरसेस प्रेजेंट इन द vaccines. They have non-nucleated and they have no nucleus, or they have deactivated by heat, or we हम जो है मतलब उसके न्यूक्लियस वगैरह को निकाल लेते हैं तो वो किल नहीं करते। सो जब जैसे भी हम वही वैक्सीन वगैरह लगा लेते हैं तो इसके अगेंस्ट हम वी आवर बॉडी मेक सम एंटीबॉडीज। सो दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी व्हेन एक्टिव वायरस ऑफ द पोलियो एक्ट ऑन आवर बॉडी और इन्वेड आवर बॉडी, देन दीज antibodies helps to kill these viruses. So, humoral immunity is all about the production of antibodies by B cell to fight off foreign substances and protect our body. हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ है ये हम इस वजह से, मतलब ये वैक्सीन वगैरह हम लगाते हैं। प्रीवियस टाइम में हमने बात की कि हम इस वजह से ये वैक्सीन वगैरह लगाते हैं कि हमारे पास एक इम्यूनिटी को डेवलप करती है जी। और जैसे भी हमारे पास एक एक्टिव वायरस आता है और वो हमको किल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो मौजूद एंटीबॉडीज़ होती है उसके ख़िलाफ़ वो उसको किल करने में मदद करती है। सो दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन अबाउट इम्यूनिटी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स। सर डॉक्टर नियाज साहब, हमारे जो टीचर है बैक्टीरियोलॉजी के, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें मौका दिया है प्रेजेंटेशन को, मतलब इस तरह की करने के लिए, क्योंकि हमें ये तरीका भी सीखने को मिल जाएगा और हम बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे इससे। थैंक यू सो मच।